ये भी तो नहीं था, वो भी गया। हेलो, अभी आ रहा है? हेलो, गुड आफ्टरनून यार। स्टार्ट करते हैं अपन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। Simple harmonic motion, right? So before simple harmonic motion, first I will discuss about periodic motion and oscillatory motion. Periodic motion and oscillatory motion. After that, I will discuss about simple harmonic motion, right? तो periodic motion होगा क्या? तो देखते हैं अपन periodic motion. Periodic motion, right? Periodic motion. तो periodic motion क्या होगा? कि अगर कोई भी पार्टिकल है, सपोज अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, अलोंग अ डेफिनेट पाथ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट? इस पे जा रहा है। तो अब यहाँ से ये अगर मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, ए से पार्टिकल इस डायरेक्शन में, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, राइट? तो 1 ऑसिलेशन हो गया, तो इसका टाइम टी होगा। फिर यहाँ से फिर से ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम टी होगा। फिर से यहाँ पे आ रहा है, इसका टाइम टी होगा, राइट? इसको आप क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ये मोशन क्या होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। So same path and same time. Yes, है ना, along a definite path after regular interval of time। अब जैसे मान लो ये कोई एक्सिस है, ये पॉइंट है, यहाँ पे अपने पॉइंट कंसिडर कर लिया। And motion of particle is like this। यहाँ से एक पार्टिकल जा रहा है, इस डायरेक्शन में गया, फिर से ये रिटर्न हो रहा है इसी डायरेक्शन में, फिर से यहाँ पे गया और फिर से ये रिटर्न हो रहा है इस डायरेक्शन। मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आप इसमें अगर टाइम टी लग रहा है, फिर से पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से पे आ रहा है, फिर से टाइम टी लग रहा है, तो यू कैन से सच टाइप ऑफ मोशन आर पीरियोडिक मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन। क्या है? एक रेगुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने मोशन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, 1 ऑसिलेशन हो गया ये, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, फिर इसी पाथ के अलॉन्ग यहाँ से यहाँ, फिर ये आया, फिर इसी पाथ के अलॉन्ग आया। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, राइट? लेकिन अगर एक पार्टिकल है, जैसे ये यहाँ इसके अबाउट, तो इसके बाद पार्टिकल इस साइड जा रहा है और यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, राइट? इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो आप इस मोशन को, ये पीरियोडिक भी है बट इस मोशन को आप क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन होगा? ऑसिलेटरी। कैसा मोशन? ये टू एंड फ्रो टाइप्स मोशन है ना, बैक एंड फोर्थ टाइप मोशन है। तो इसलिए आप ऐसे मोशन को क्या बोलोगे? ऑसिलेटरी मोशन। बट यू कांट से दिस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। मतलब ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकता है बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, So राइट? oscillatory motion is motion around an average fixed point.
yes, this one oscillation. मतलब किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट अगर मोशन हो रहा है ना, टू एंड फ्रो टाइप मोशन, इफ अ बॉडी पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट or you can say about a fixed axis, then in that case such type of motion is said to be oscillatory motion, right? एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या होगा. Periodic motion. Periodic motion if a particle repeats if a particle repeats its motion along its motion along if a particle repeats its motion along a definite path along a definite path after regular interval of time, definite path after regular interval of time, then if a particle repeats its motion along a definite path after regular interval of time, then motion is said to be periodic. Then such type of motion is said to be periodic, right? Next, oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion क्या होगा? The motion of particle is said to be oscillatory. The motion of a particle is said to be the motion of a particle is said to be oscillatory if it moves back and forth about a fixed point or fixed axis. About a fixed point or fixed axis, right? उस मोशन को आप क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. नोट कर लो.
Done, sir. ऑसिलेटरी मोशन, देखो यहाँ पे पार्टिकल, ये ऑसिलेटरी मोशन, जैसे अगर आप सपोज एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले रहा हूँ, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम, या फिर कोई भी आप ले सकते हैं ऐसे। जैसे पार्टिकल को आपने यहाँ से क्या किया, रिलीज किया, यहाँ से आपने क्या किया, रिलीज मतलब ये इनिशियली मीन पोजीशन पे है और आप थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। पहले इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, देन आपने इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से, राइट। पहले क्या किया, ये यहाँ पे था, आपने इसको डिस्प्लेस किया थीटा एंगल से। देखो आप किस डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, तो आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। आप इसको किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस पे जो फोर्स एक्ट करना चाहिए वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स, तो देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, एक कंपोनेंट इस साइड आएगा। अगर ये थीटा ले लिया तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा, mg sin। तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा है और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा है। तो यहाँ से अगर आप एनालाइज करोगे तो देखोगे कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, बट इस पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। और यू कैन से टॉर्क भी आप फाइंड कर सकते हैं, बट अभी फोर्स से रिलेट करो। जैसे इस पार्टिकल को आप क्या कर रहे हो, ये इसका मीन पोजीशन है, सपोज मीन पोजीशन पे क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वुड बी 0, मीन पोजीशन, or you can say mean position or equilibrium position. mean position और equilibrium position, right? तो ये पोजीशन है, ये पॉइंट है वो। अब यहाँ से क्या होगा कि अगर आप पार्टिकल को इस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना, इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड राइटवर्ड्स, इस साइड आपने डिस्प्लेस किया, तो अभी क्या होगा, अगर आपने इस साइड डिस्प्लेस किया ना इसको, लेट्स से वेलोसिटी दिस पार्टिकल इज v, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। आपने इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया ना, इसकी वेलोसिटी v है, v इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। जब नेचर फाइंड करते हैं, नेचर ऑफ मीन पोजीशन या नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप फाइंड करते हैं तो वहां पे क्या आता है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, राइट। तो स्टेबल का केस जो होता है वो कैसा होता है कि अगर आप मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे ना, तो फोर्स उस पे किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स एक्ट कर रहा होगा, है ना। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू ब्रिंग इट्स बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, राइट। तो उस केस में ये जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब ये जो मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो अब देखो ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में, बट उसमें फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी 0, है ना। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी 0, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो, और इस पे फोर्स भी एक्ट कर रहा, तो फिर से ये क्या होगा, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा। अब वो उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, और फिर फाइनली ये यहाँ पे आएगा, और फिर इस साइड जैसे अब मूव करना स्टार्ट करेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये वापस इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये ऑसिलेट करता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं तो इसकी कुछ वेलोसिटी है ना, और आफ्टर सम, क्योंकि फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी 0, और फिर से वो वापस इस डायरेक्शन में आएगा, फिर से ये ऐसा जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और फिर से ये रोटेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो बेसिकली क्या होता है, इन केस ऑफ ऑसिलेशन देयर वुड बी रिस्टोरिंग फोर्स,
है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, और यू कैन से रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर लीनियर मोशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, अगर एंगुलर मोशन है और यू कैन से रोटेशनल मोशन है तो उस केस में रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो बेसिकली ये ऑसिलेशन है, उसके पीछे का जो रीजन है, कॉज है, वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इस एक्सिस के वो टॉर्क भी आप देख सकते हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्यों आया रिस्टोरिंग टॉर्क। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराया तो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अभी भी समझ सकते हो, जैसे ये इसका वेक्टर आर हो जाएगा, ये वेक्टर आर हो गया, और ये एफ है, या ये एफ है ना, तो इस पे अगर टॉर्क फाइंड करोगे तो क्लॉकवाइज आएगा। टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा, टॉर्क यहाँ पे आर क्रॉस एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। मतलब आप रोटेट करा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट रिस्टोरिंग टॉर्क, ये टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आप उसको क्या बोलोगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में, बट फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इसका लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, बट हियर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यहाँ पे क्या है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होगा, इसका ऑसिलेशन, इस केस में इसका क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। तो बेसिकली ऑसिलेशन के लिए जो आता है वो क्या होगा, मेन कॉज इसका क्या है कि यहाँ पे So when the force is restoring it to the mean position. yeah, it is always directed towards mean position, right? Yes, sir. But at mean position, what to do the value of restoring force? 0, sir. 0, right? So restoring force. तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इट ट्राइज, So and because of restoring force, there will be a restoring torque also. yes, right, it tries to bring the particle towards, it tries to bring the particle towards mean position, particle towards mean position, towards mean it tries to bring the particle towards mean position. At mean position, the value of restoring force, it is always directed towards mean position. ये भी लिख सकते हैं, it is always directed towards mean position. 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 है ना? At mean position, the value of restoring force would be 0. Note कर लीजिए आप. Done, sir. At mean position and
at mean position restoring value of restoring force Fr would be 0. The value of restoring force is 0, है ना, या mean position पे ये 0 हो जाएगा in case of translational motion. And restoring torque in case of rotational motion. In case of rotational motion, Fr की वैल्यू 0 हो जाएगी and torque की वैल्यू 0 हो जाएगी in case of rotational motion, right? Next, SHM, simple harmonic motion. SHM क्या? It is a special type of oscillatory motion. लिखिए, it is a special type of 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 oscillatory motion. It is a special type of oscillatory motion. It is a special type of oscillatory motion in which its acceleration is directly proportional to in which the acceleration of particle in which the acceleration of particle is which the acceleration of particle is directly proportional to in which the acceleration of particle is directly proportional to its displacement. It's directly proportional to its displacement and always is always directed towards mean position. Is directed towards mean position. मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, बट ये एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा? मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होगा. इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? मीन position. It is a special type of oscillatory motion in which the acceleration of particle is directly proportional to its displacement and always directed towards mean position.
Answer. इस केस में क्या हो रहा है, x equals to 0, x equals to plus a, and this one is x equals to minus a, sorry, minus a plus a. Plus a minus a, right? X equals to minus a, x equals to 0 and x equals to plus a. ये जो आपका x equals to 0 है, मैं assume कर रहा हूँ कि this one is mean position. ये इसका mean position, right? ये जो इसका extreme position है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, velocity of particle would be at extreme position. velocity क्या होगी particle की, extreme position, right? तो यहाँ पे देखो, अगर ये मोशन स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, यहाँ पे जाएगा, फिर ये रिटर्न होगा, रिटर्न हो रहा है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0 एट दिस पोजीशन, राइट? तो एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0, एट एक्सट्रीम पोजीशंस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी 0, राइट? वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी, इस पॉइंट पे v वुड बी 0 और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की 0 हो जाएगी. डू यू एग्री विद दिस, राइट? Yes, sir. अब इसका जो मोशन है वो मोशन एग्जैक्टली कैसा हो रहा है, वन ऑसिलेशन आप किसको बोलेंगे? जैसे ये पार्टिकल यहाँ से ऐसा जा रहा है, यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से ये इसी पाथ के लॉन्ग जो है वो रिटर्न होगा, बट मैं अलग से उसका पाथ शो कर रहा हूँ आप समझने के लिए, राइट? ये इसके लॉन्ग गया और फिर वापस इसके लॉन्ग आ गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, वन ऑसिलेशन. ये क्या हो जाएगा, वन ऑसिलेशन, राइट? अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा? A. तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, दिस वन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. ये क्या है, इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, राइट? ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, वो भी एक्सट्रीम है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी. डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. अब कोई भी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे एट x इक्वल्स टू x, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में, बट इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इसी डायरेक्शन में, है ना? तो एक्सेलरेशन क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बट ऑपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, राइट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x हो जाएगा. तो यहां से आप बोल सकते हैं कि f की जो वैल्यू होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, राइट? तो fr की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस kx, वेयर k इज कांस्टेंट. यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा, k क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा. तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस fr. क्या है आपका, fr क्या लिख रहे हैं अपन, r रिस्टोरिंग है ना, इसलिए मैं इसको रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए मैं इसको fr लिख रहा हूँ. रिस्टोरिंग फोर्स fr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. तो fr की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस kx. fr इक्वल्स टू माइनस kx. तो यहाँ से आप fr को आप क्या लिख सकते हैं, fr वुड बी m into a, मास into acceleration, माइनस kx, राइट? तो a की जो वैल्यू होगी a इक्वल्स टू माइनस k अपॉन m into x, माइनस k अपॉन
m इंटू एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, m की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को आप ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कांस्टेंट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। वो आगे सर्कुलर मोशन से आपको समझ में आएगा कि ओमेगा स्क्वायर मैंने इसको क्यों बोला है। अभी नहीं, जब इसी का सर्कुलर पार्ट पढ़ाऊंगा ना, आप इस मोशन को एसएचएम को एनालाइज कर सकते हैं सर्कुलर मोशन से भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, राइट। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ओमेगा ही क्यों आया था यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से ऑसिलेशन का मतलब ये यहाँ से जा रहा है ऐसे, यहाँ पे जो एक्स लिख रहा हूं मैं, तो एसएचएम के केस में जो एक्स की वैल्यू होती है, इन केस ऑफ एसएचएम, omega here is angular speed about the mean position, right? हाँ एंगुलर स्पीड है, बट यहाँ पे अपन उसको एंगुलर स्पीड नहीं बोलेंगे। जब मैं इसका सर्कुलर पार्ट बताऊंगा ना, वहां पे ओमेगा आ जाएगा एंगुलर स्पीड, बट हियर ओमेगा वुड बी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बिकॉज k बाई एम इज कांस्टेंट, k बाई एम इज कांस्टेंट। तो बेसिकली जब इसको अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर मैं सर्कुलर मोशन इसका बता रहा हूँ, तो सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So if whatever it's not going in a circular path, so then also is omega defined? यस, ओमेगा वुड बी डिफाइंड, है ना, ओमेगा डिफाइंड होगा, बट सर्कुलर मोशन से इसको, जैसे ओमेगा क्या, ओमेगा इज कांस्टेंट, राइट। अब ये सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। Yes. ऐसे पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, बट इसको जो है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू आ गई कांस्टेंट, और अपने को पता है कि ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है तो आप उसको ऐसा, पीरियोडिक मोशन है ये मोशन क्या है, पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक मोशन को आप ऐसा बना सकते हैं कि अगर एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है तो वो भी पीरियोडिक होगा, उसका भी आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, उसको भी आप जो है इससे जो So हॉरिजॉन्टल, they यस pretend like it's a circular motion. यस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो Okay. वो आप उससे समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ अभी इतना लर्न कर लेना है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो कि वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर वुड बी के बाई एम, सिर्फ इतना लर्न कर लेना है। हेंस या वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम, एंड ओमेगा की जो वैल्यू होगी इट विल बी रूट ओवर के बाई एम, रूट ओवर के बाई एम। और ये ओमेगा को आप बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। नोट कर लो। तो यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड 2, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू, या यू कैन से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा इज And रूट so ओवर, here the constant k, so what is that constant dependent on? k इज अ कांस्टेंट ना, तो k इज कांस्टेंट मतलब ये जो है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मोशन या नेचर ऑफ मोशन, वो नेचर ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन है, तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन k वुड बी डिफरेंट, फॉर रोटेशनल मोशन k वुड बी डिफरेंट, so it depends on nature of motion या टाइप्स ऑफ मोशन। Okay. यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई रूट ओवर m बाई k, राइट। नोट कर लीजिए आप इतना पहले।
Done, sir. देखो यहाँ से एक फंक्शन अपना क्या आ रहा है, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो अच्छा a इज नथिंग बट सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यू कैन राइट इट एज d बाई dt एंड x की वैल्यू v क्या होगा, dx बाई dt टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। देखो क्या आया, d2x अपॉन यहाँ पे x है ना, ये वाली वैल्यू अगर x है ये, तो ये भी x होगा, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, जनरली ओमेगा स्क्वायर आएगा वो, ये कांस्टेंट। तो ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसी को मैंने लिख दिया बेसिकली a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो ये जो फॉर्म है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। differential form of SHM d2x upon dt square plus omega square x equals to 0 where x is where omega square is constant, है ना। any equation है ना which satisfies this equation, any equation which satisfies differential form of SHM would be the equation of displacement of SHM या displacement of particle. Just let's say for example x is given as a sin omega t, है ना। You have to verify कि x equals to a sin omega t is equation of SHM or not, ये equation of SHM है या नहीं है, right? तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to find second derivative of x, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM क्या है, ये d2x upon dt square plus omega square x equals to 0। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM लाना पड़ेगा। अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM को सेटिस्फाई कर रहा है, then in that case x equals to a sin omega t would be the equation of SHM, would be the equation of SHM, right? तो अब मुझे ये फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि x equals to a sin omega t, है ना, ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, dx बाई dt। तो dx बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2x ये क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t का क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, राइट। तो यहाँ से देखो अब क्या आ रहा है, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। अब ये जो a sin ओमेगा t है वो क्या है, x है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, ये x, राइट। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस वन इज x। तो ये आ गया ना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM। इसका मतलब x इक्वल्स टू a sin इक्वल्स टू 0, मतलब ये SHM है। इट मींस x equals to a sin omega t represents the equation of SHM, represents the equation of SHM, right? मतलब कोई भी इक्वेशन गिवन है तो आपको क्या करना है, you have to find second derivative of given function, you have to find second derivative of given function with respect to time, अगर वो आफ्टर दैट अगर कुछ ऐसा फंक्शन दिख रहा है आपको d2x upon dt square plus some constant into x equals to 0, then in that case the given function would be the equation of SHM, right? नोट कर लो आप, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ से
ऐसा लिखेंगे, represents SHM or not. और right, x equals to a sin omega t represents SHM or, तो ये represent कर रहा है, ये represent कर रहा है, right? Done, sir. मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, a equals to minus omega square x. देखो a को आप क्या ले, a here a is a function of x, so you can write it as a equals to dv by dx. dv by dx equals to minus omega square x, minus omega v dv by dx equals to minus omega square x. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, v dv equals to minus omega square x dx, minus omega square x dx, v dv equals to minus omega square x dx. इंटीग्रेट कर दिया इसको, राइट, इंटीग्रेट कर दिया. अब ये बताओ, एट x equals to प्लस a और माइनस a, at x equals to plus a or minus a, what would be the velocity of particle? At x equals to plus a or minus a, what would be the velocity of particle? Velocity क्या होगी particle की x equals to minus a या plus a पे? At x equals to plus a और minus a वो क्या है? Particle का वो क्या है? कौन सा position है? So can you repeat? What would be the velocity of particle at x equals to plus a or minus a? 0. 0. So at x equals to plus a, velocity of particle would be 0. Let's say at x equals to x, velocity of particle is v. At any x, velocity of particle would be v. So you can write it as v dv. So v square by 2, 0 to v equals to minus omega square x square by 2, right? A to x, a to x. 2 will get cancelled out. So it would be v square minus 0 square equals to minus omega square x square minus a square, right? x square minus a square. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v square equals to omega square minus मल्टीप्लाई कर दो a square minus x square, a square minus x square. Therefore v would be v equals to omega into root over a square minus x square. This is the velocity of particle at any displacement x, at any displacement x, right? So at mean position, what would be the velocity of particle? At mean position, what would be the velocity of particle? At mean position, W is omega a, sir. omega, and this omega would be the maximum value of v, right? Because x Is it की that value it's decreasing and acceleration is opposite to velocity if it's not that. at mean position, v would be x equals to 0, right? X equals to 0, and v would be omega into root over a square minus 0 square. So a square minus 0 square. Therefore, v equals to omega into a, and this is nothing but the maximum velocity of particle. It would be v max.
and at mean position force acting on the particle would be 0 and acceleration of the particle would be 0. अगर acceleration 0 and then velocity would be maximum, right? Next क्या आ जाएगा आपको, यहाँ से v को मैं फिर से लिख रहा हूँ, v equals to omega into root over a square minus x square, because we have to find the function of, we have to find x या displacement as a function of time. तो v की वैल्यू क्या है, omega into root over a square minus x square. v equals to omega into root over a square minus x square, right? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx by dt, v equals to dx by dt equals to omega into root over a square minus x square, है ना, dx by dt equals to omega into root over a square minus x square. तो dx क्या आ जाएगा, a square minus x square equals to omega dt. आप इतना नोट कर लो. Done, sir. Sir, done. dx equals to root over a square minus x square equals to omega dt, right? तो डिफरेंशिएट इसको कर सकते, तो dA, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या था वो dx, राइट,
dx upon. Are you getting me? Am I audible to you, Shiv? Shiv. Shiv, am I audible to you? At at t equals to 0, at t equals to 0, x equals to, yeah, you can say, yeah, let it do it like this. Shiv, Shiv, am I audible to you? Shiv. So it would be sine inverse. Shiv, where he is, x upon a equals to omega t plus some constant. So it would be phi. It would be phi, right? So some constant को मैंने phi इसलिए कंसीडर किया बिकॉज ये साइन इस साइड आएगा तो वो एंगल में आ जाएगा, राइट? So it would be x upon a equals to sine omega t plus phi. Sine omega t plus phi. Therefore, x equals to a sine omega t plus phi. X equals to a sine omega t plus phi, right? X is nothing but displacement of particle. Displacement of particle from mean position, from mean position. A is amplitude of oscillation. Excuse me, sir. I accidentally got disconnected. Was there a slide before this? Okay, sir. This I got. So your voice isn't coming. So integration of dx, integration of 1 upon root over a square minus x square equals to sine inverse x upon a. Do you know this? Yes, sir. This one would be omega dt and there would be some constant too. Yes, sir. So I've taken it as phi. Phi क्यों लिया? Because sine इस साइड आएगा तो एंगल में आ जाएगा, right? तो इसलिए मैंने phi consider किया. You can consider it as c or c1, c2, anything. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x ये इस साइड आ जाएगा तो x equals to a sin omega t plus phi. Here x is displacement of particle from mean position. ये important है. Displacement of particle from mean position. This one is amplitude of oscillation. Amplitude of oscillation. Is amplitude of oscillation. Omega is angular frequency. Omega is angular frequency. This whole term omega t plus phi is known as phase. Omega t plus phi is known as phase. Phase, or you can say angular position of particle. Or you can say angular position of particle, right? So phase equals to omega t plus phi. Phase equals to omega t plus phi. At t equals to 0,
what would be the value of phase? Phase equals to omega into 0 plus phi. ये 0 आ जाएगा, 0 plus phi. So ये वाली value 5 हो जाएगी, right? At t equals to 0, phase would be phi. At t equals to 0, phase would be phi, right? So this phase is nothing but, you can say at t equals to 0 means initial phase, or you can say phase constant, it remains constant. Initial phase or phase constant, phase constant, और एक नया टर्म आता है इसके लिए, एपोच. कभी कभी बाय चांस आपसे ये नहीं पूछा जाएगा इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट, आपसे पूछा जाएगा एपोच, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एपोच, है ना? तो इसी को एपोच बोलते हैं, और यू कैन से फेज कांस्टेंट और फेज इनिशियल फेज. नोट कर लो. डन. So 1 second. Done, sir. Let's say particle starts its motion from x equals to 0, or you can say mean position. Particle starts its motion from mean position. यहाँ से motion को start कर रहा है, right? t equals to 0 पे ये particle यहाँ पे, this one is x equals to plus है, तो you can find the initial phase or phase angle x equals to minus, right? So general equation of SHM is x equals to a sin omega t plus phi, right? General equation of SHM is x equals to a sin omega t plus phi. तो देखो at t equals to 0, x is 0, x को मैं 0 पुट कर देता हूँ, equals to a sin omega t plus phi. a can't be 0, तो sin omega t would be 0, omega t plus phi. Sin omega t plus phi is 0, right? So you can find the value of phase की value 0 है, तो ये phase क्या आ गया 0. बट आपको पता है t की value 0, phase तो 0 होगा ही इस point पे, if a particle is moving towards positive x-axis, and in that case omega t plus phi would be 0, और ये वाली value क्या हो जाएगी, omega into 0 plus phi equals to 0. तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो phi की value क्या आ जाएगी 0. So initial phase, if a particle starts its motion from mean position and moving towards x equals to plus a, क्या है, if a particle starts its motion from mean position and moving towards x equals to plus a, then in that case initial phase of particle would be 0.
initial phase of particle would be 0, or you can say phase of particle would be 0 at that instant. So in this case, equation of displacement of particle would be, in this case, equation of displacement of particle would be displacement of particle, equation of displacement of particle. In this case, equation of displacement of particle would be x equals to particle at any time t, at any time t. Equation of displacement of particle at any time t, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin omega t, a sin omega t, x equals to a sin omega t. phi की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो उस केस में आप इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन जो आएगा वो आएगा x equals to a sin omega t, right? x equals to a sin omega t, equation of displacement of particle at any time. बट ये मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशंस. आपको इसका आइडेंटिफाई करना है, find the initial phase of particle and what will be the equation of displacement of particle at any time t. ये इसका मीन पोजीशन है. ये मीन पोजीशन है और यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस है, प्लस है, एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है, माइनस है, राइट? पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली एट x इक्वल्स टू प्लस a by equals to a by 2 and particle is moving towards positive extreme position और x equals to plus है, right? तो इस केस में आपको क्या फाइंड करना है, इनिशियल फेज की वैल्यू फाइंड करनी है. फेज की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल फेज एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t. फाइंड इट. What is the value of initial phase? Shiv, Yes, sir. what is the value of initial phase in this case? If particle starts its motion from x equals to plus a by 2. So pi by 6. pi by 6, right? तो यहाँ से आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, जनरल इक्वेशन ऑफ displacement of particle is x equals to a sin omega t plus phi, right? तो at x equals to 0, sorry, at t equals to 0, x equals to a by 2, है ना? At t equals to 0, x equals to a sin omega t plus phi. ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a by 2 equals to a sin omega t plus phi, right? ये से कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ equals to sin omega t plus phi. तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6 ओमेगा टी प्लस
फाई इक्वल्स टू पाई बाय 6, राइट। देखो यहाँ पे टी की वैल्यू तो 0, ये पूरा फेज हो गया। अगर कभी भी आपको फेज फाइंड करना पड़े, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज एट x इक्वल्स टू a/2, देन फेज ऑफ पार्टिकल वुड बी पाई बाय 6 if particle is moving towards plus x equals to is moving towards x equals to plus a, है ना, is moving towards x equals to plus a, तो उस केस में फेज की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 6। तो ओमेगा इनटू हियर t is 0, t is 0, राइट। तो प्लस 5 equals to pi by 6, therefore phi equals to pi by 6, फिर phi equals to pi by 6, omega t is 0, phi plus pi by 6, तो phi equals to pi by 6, right? Yes, sir. phi की वैल्यू क्या हो जाएगी, pi by 6 हो जाएगी। तो you can write the equation of displacement of particle at any time t। पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, इट वुड बी x equals to a sin omega t plus pi by 6, right? Done, sir. तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, राइट। अगर ये पार्टिकल मोशन यहाँ से कर रहा है तो बताओ अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू प्लस a, और दिस वन इज x इक्वल्स टू माइनस a। if particle starts its motion from x equals to plus a, यहाँ से ये मोशन स्टार्ट कर रहा है t equals to 0, so what is the value of initial phase, what is the equation of displacement of particle at any time t, find it। So phi is equal to pi by x is equal to a sin omega t plus pi by 2. राइट। तो यहाँ से जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगा, at t equals to 0, t equals to 0, x equals to a sin omega t plus, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, a equals to a sin ओमेगा t प्लस 5, तो यहाँ से a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, 1 है, तो मतलब ओमेगा t प्लस 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2। अब पता है यहाँ पे मतलब फेज की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पाई बाय 2 होगी, बट यहाँ पे इस केस में t की वैल्यू 0 हो गई, प्लस 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2, hence phi equals to pi by 2।
equation of displacement of particle at any time t. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय, राइट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, a cos ओमेगा t, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये हो जाएगा। मतलब अगर पार्टिकल जो है मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, देन इन दैट केस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वुड बी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, राइट। अब यहाँ से देखो क्या समझा अपन ने, ये बताओ अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, इसका फेज क्या आ रहा है, 0। जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे, फेज क्या आ रहा है, पाई बाई 2। अच्छा, ये फेज जो है पाई बाई 2 आ रहा है, अगर ये रिटर्न होगा तो फिर से जब ये मीन पोजीशन पे आएगा तो व्हाट वुड बी द फेज ऑफ पार्टिकल? हाँ, so still pi by 2. पाई बाई 2 होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक पाई बाई 2, फिर ये यहाँ से आएगा पाई बाई 2, तो टोटल कितना होगा So मीन pi. पोजीशन से पाई, यहाँ से यहाँ गया तो 3 पाई बाई 2, राइट। Yes sir. और फिर यहाँ से यहाँ आया तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 पाई। Yes sir. इसका मतलब इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन द एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल वुड बी So 2 pi. 2 पाई हो रहा है, तो आप इसको सर्कुलर मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? So shouldn't it, in the equation, shouldn't it be minus cos omega t? Which one? This one? Yes sir, the one in the box. Why x equals to minus a So cos omega? because sin pi by 2 plus theta equals minus cos theta. ना, No, देखो, understand. Sorry sir. सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, और साइन है, तो Sin साइन is के positive in second quadrant. यस यस, राइट। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल कितना हो जाएगा, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल वुड बी 2 पाई। तो आप इसको सर्कुलर मोशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, वो देखेंगे अपन अभी। That's how they get omega sir. yes. तो आप ऐसा लिख लो, एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल, covered by particle in one complete oscillation is 2 pi by particle, angle covered by particle in one complete oscillation is 2 pi radian, right? So x equals 0 to x equals a pi by 2, then back to x equals 0 is another pi by 2, Right. and then so 4 times pi by 2. Yes. तो फिर से अगर time taken to complete one oscillation is known as time period, right? Yes sir. तो अब मुझे बताओ, यहाँ से वन ऑसिलेशन मतलब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट? दिस वन वुड बी द वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन। तो इसके टाइम पीरियड को मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा, T/4. हाँ t/4। यहाँ से यहाँ तक का टाइम फिर से t/4, देन यहाँ से t/4, फिर यहाँ से यहाँ t/4। तो अगर मुझे x equals to 0 to x equals to a/2 जाना है, time taken by particle to move from x equals to 0 to x equals to a/2, X equals to 0 to x equals a by 2, so t/8 sir. t/8. Why t/8? Why the value of t is t/8? Because for the full oscillation it's t, so therefore x equals 0 to x equals a, it's t/4, so then divide by 2 once again sir, t/8. No. Why it is t/4? Because at this point velocity of particle is maximum and velocity of particle is 0. If particle is moving from, let's say, a to b, this one is a, this one is b. If a particle moves from a to it's not linear over there. t/4, then
B2A, it would be T by 4. Why T by 4? Because at this point velocity of particle would be maximum and at this point velocity of particle would be 0. तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है इसलिए T by 4 होगा. बट हाफ में जो हो जाएगा ना वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेगा. एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, राइट. एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ x. तो आप T by 8 नहीं बोल सकते, T by 8 डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, राइट. नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड. Answer.
So I'm not able to solve it. Write the equation of displacement of particle if it starts motion from mean position. Yes, sir, done. Writing it. Put the value of t. Put the value of x. How much are you getting? Okay, so 1 second, sir. So t by 12. T by 12, right? इक्वेशन क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x equals to a sin, because particle starts motion from mean position, a sin omega t plus phi, right? x की वैल्यू हो जाएगी आपको, x is a by 2, x equals to a by 2 equals to a sin a omega t and phi would be 0, right? phi की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 0, because particle starts motion from mean position, तो phi would be 0, कैंसल आउट हो गया, तो ये जाएगा हाफ इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ओमेगा टी इज हाफ, राइट? मींस ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको? पाई बाय ओमेगा टी इज पाई बाय 6। ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय टी इंटू टी इक्वल्स टू पाई बाय 6। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी बाय 12, टी बाय 12, राइट? टी बाय 12, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी बाय 12। Done, sir. नेक्स्ट, अच्छा ये अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू
x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू a/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू a, राइट। अब ये पार्टिकल यहाँ से मोशन तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल्स टू a/2 टू x इक्वल्स टू a। Find the time taken by particle to move from x equals to a/2 to x equals to a. Find the time taken by particle to move from x equals to a/2 to x equals to a. क्या होगा टाइम? So t/6. बिकॉज यहाँ से टाइम क्या लग रहा है, t यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 है, राइट? Yes, sir. So t/4 minus t/12. यहाँ से x इक्वल्स टू आ गया आपका a और ये है x इक्वल्स टू a/2। तो यहाँ से जो टाइम आ रहा है ये टाइम जो है ये वाली वैल्यू है t/12 और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये है t/4। तो ये जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू t/4 माइनस t/12। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल्स टू 12, ये आ जाएगा 3t माइनस t। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t/12 t/6। t बाय टाइम की वैल्यू हो जाएगी t/6, राइट? नोट कर लीजिए आप। Is it visible? Yes, sir. Done, sir. Next. Find the distance covered by particle. Find the distance find the distance covered by the particle find the distance covered by the particle in t/12 seconds. In t/12 seconds, if t is the time period of oscillation. X equals to 0. Particle starts its motion from extreme position. कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, t equals to 0, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन t/12 seconds where t is time period of oscillation. Is
time period of oscillation. T is time period of oscillation, right? Find the distance covered by the particle in t by 12 second, where t is time period of oscillation. X equals to 0 है और ये x equals to plus a है. Right? So root 3 by 2a. देखते हैं क्या आ रहा है. इक्वेशन क्या लिखेंगे अपन? इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. A cos omega t. A cos omega t, because particle starts motion from extreme position, so it would be A cos omega t. X की वैल्यू क्या है? X equals to A. यहाँ से X फाइंड करना है, तो A आ जाएगा cos. ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई टी. एंड t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t by 12. So t will get cancelled out, therefore x equals to A cos, ये आ जाएगा आपका pi by 6. Pi by 6. Therefore x equals to cos pi by 6 is root 3 by 2. तो ये हो जाएगा root 3 a by 2. Right? बट आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस. x क्या है यहाँ पे? मुझे बताओ x क्या है? Root 3a by 2. नहीं, x क्या डिफाइन करता है? Also position from the mean point. Mean, right? Equation डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन. मतलब कहीं पार्टिकल यहाँ पे होगा. A minus root 3a by 2. राइट. ये आपका x equals to root 3 a by 2. So this one is displacement of particle from mean position. We have to find the value of distance. अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस कवर किया होगा पार्टिकल ने. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस टोटल माइनस दिस. तो इट वुड बी a, it would be a minus root 3 a by 2. यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू राइट. दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल
distance covered by the particle distance covered by the particle, right? Next is graphical analysis of graphical analysis of oscillation. Graphical analysis of oscillation. X equals to मीन पोजीशन से मैं शो कर रहा हूँ, तो x equals to पार्टिकल इनिशियली पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a sin ओमेगा t, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin ओमेगा t, राइट। तो इसका अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ कैसा आएगा, साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन आ गया तो साइन का कर्व आ जाएगा लाइक दिस, राइट। टाइम फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे तो टोटल एंगल time for one full wavelength. हाँ, यहाँ से यहाँ तक टाइम फाइंड हो जाएगा, बट यहाँ का भी टाइम देखोगे, अगर एंगल से मैं ड्रॉ करता साइन थीटा होता तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई, राइट। यहाँ पे थीटा क्या होता है, 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू पाई मींस ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई, सो टी वुड बी पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ का टाइम क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन। अगर मुझे v फाइंड करना होगा, v, तो v आप कैसे फाइंड करोगे, v इक्वल्स टू dx by dt, v इक्वल्स टू dx by dt, dx by dt की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, a ओमेगा cos ओमेगा t, v equals to a omega cos omega t, therefore v equals to a omega, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है cos omega t। तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो किसका ग्राफ आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा cos का, v ये हो जाएगा t, कुछ ऐसा फंक्शन हो जाएगा, राइट, cos का ग्राफ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करूं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv by dt, therefore a equals to ये जाएगा a ओमेगा cos क्या हो जाएगा, cos ओमेगा इज माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, a equals to minus omega square is sin omega t, then you can say maximum value of acceleration is omega square, है ना। इसको आप x भी लिख सकते हैं, ये वाला टर्म क्या है x, तो a equals to minus omega square x, अपन ने पढ़ा a equals to minus omega square x। तो इसका ग्राफ जो आएगा वो भी साइन का आएगा, बट नेगेटिव साइन है, तो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ग्राफ कुछ ऐसा, क्लियर है, Yes, sir. नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लो फिर आप।
Done, sir. So your voice isn't coming. ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसका ग्राफ आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये ए है और ये एक्स है, तो ए एक्स का ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे नेचर क्या है इसका, नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज ए का पावर 1 एक्स का पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट, straight line passing through origin having negative slope, straight line passing through origin having negative slope, ये आ जाएगा। अगर मुझे ग्राफ बनाना है v एंड x का, तो v की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v एंड x का ग्राफ क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर minus omega square x square, so it would be v square plus omega square x square equals to omega square x square, right, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको इस साइड लाओ, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या, नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज So circle. if omega equals to 1 then in that case it would be circle, ये पढ़ा क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, No, sir. ये उसी टाइप का ग्राफ है, ये होता है एलिप्स, So we're still on a parabola, sir. तो ये क्या हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा, ग्राफ इसका कैसा होगा, इफ ओमेगा इज 1 ना, अगर ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, इन दैट केस ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आप एलिप्स जो है, बिकॉज ओमेगा जनरली 1 से ग्रेटर ही होना है, तो एलिप्स इसका कुछ ऐसा है, इस टाइप का होता है एलिप्स, ये v है, ये x है, ये डिस्टेंस जो है इसको बोलते हैं, इसका डिस्टेंस जो है इससे तो लेस है, इससे लेस है, तो इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस, और ये वाली वैल्यू ए होगी, और ये जो है वो सेमी मेजर एक्सिस, इसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू ए, इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ओमेगा इंटू ए, ये वाली वैल्यू होगी, राइट, ओमेगा इंटू, ये एलिप्स हो जाएगा, नोट कर लो,
Done, sir. Shiv, Shiv, hello. Huh? Can you open your video? प्रीति मैम को बुलाओ, गौतम सर को बुलाओ तुरंत. Hello, sir. Yes. Yeah. Yeah, Shiv. Hi, sir. Hi Shiv, this Hello. is Kuldeep Tyagi. I take care of the management part here at PACE. बेटा आप लोग physically नहीं आ रहे हो पढ़ने? No, sir. You don't want to come also? Sir, my school actually, sir, ends at 3 o'clock, sir. There's no time to reach the center in time for class. And then, Okay. sir, travel also. So It'll finding take. it interesting? Huh? समझ में आ रहा है जो भी पढ़ा रहा है? Right. Yes, sir. Very good. कहाँ रहते हो? Where do you stay? Sir, Malad, sir. Malad. Yes, sir. And how come that only you are there and others are not there? They have started coming physically here, or how it is? Sir, I don't know, sir. I don't talk to others from the batch, sir. What? Sir, I don't know, sir. I don't talk to other students, sir, from the batch. Okay. No, from your batch you don't speak to your fellow friends. No, sir, not much, sir. So he's mostly you are alone attending this lecture. No, sir. Usually, sir, there's 3, 4 other people, sir. Just today, I don't know. Yeah, ma'am, come on third floor if you're free for 2 minutes. You and I, sir. 5 minutes के लिए ऊपर third floor पे कहाँ पर आइए सर? ऐसे ही आएगा 2 मिनट के लिए. तो what are you saying के? अच्छा तुम्हारा physics, chemistry, math it is kept in the afternoon timings 3 to 6. Yes, sir. So 3:30 to 6. Huh. So I have school every day, sir, from 8 to 3 o'clock, sir. So afternoon. तो आप अकेले मतलब तुम्हें लगता है कि कंपटीशन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब कोई आपके साथ कॉम्पीट करने को कोई है ही नहीं. पहले तो it must be a bigger batch when Yes, sir. was there. Yes, So you sir. must be hearing a lot of sound and answers and तो अब अकेले का I don't know how well it will be going because you will never come to know, the teacher will never come to Yes, know. sir. Bigger batch was better, sir. With full news. Bigger batch was better, sir. Yeah. Kandivali, you stay at Kandivali. So Malad. Malad. Yes, sir. And कैसा पढ़ा रहे हैं टीचर्स? So very good, sir. और मैथ कौन पढ़ा रहा है? Sir, VKM, sir. VKM sir. Yes, So- sir. And sir, PM, sir. उनकी क्लास में बच्चे आते हैं PM सर और VKM सर की? आइए अंदर. VKM सर की क्लास में आते हैं बच्चे या तुम Sir, सिर्फ you. सर की? So usually, sir, there's very few students, sir, like less than 5 people on the call, sir, total. नहीं, is it just because AP सर का समझ में नहीं आता? No, sir, nothing like that. बाकियों के में 5 आ जाते हैं. Sir, sometimes people join and then leave. Sometimes I'm alone, sir. ठीक है. And how many days a week you are called, बेटा? How many days a week in classes? Yeah, here. Sir, I don't come, sir, to physical. So, अरे भाई, how many days? Acha, online. So Yes. 5 days, sometimes 4 days, but 5 days. 3 hours to 4 hours a day. 4 to 5 days, sir. Yes, sir. 4 to 5 days, 4 hours, 5 hours a day. No, sir. There's usually only, sir, 1 class a day, sir. 3 hours a day.
So except for Sunday. Sunday we have 3 classes, sir, 6 hours. Sunday you have 6 hours, 3 classes. And then usually, sir, 2.5 or 3 hours a day, sir, for the other days. क्या तो सबसे अच्छा कौन पढ़ा रहे हैं? Sir, everyone's teaching, sir, good. अच्छा, गौतम नहीं आया? उनको इमीडिएट बोला तो उसका मतलब ही समझ नहीं आया इसका. And math में PM sir, right? क्या topic? PM sir is doing limits and VKM sir is doing parabola, sir. Gautam sir. Gautam sir. टेस्ट वेस्ट कैसे करते हो? मेजर टेस्ट का पोर्शन आपका फिनिश हो चुका है या अभी? So next major test. No, sir, not done, sir. Not done yet. Not done, sir. We finished in physics. There's SHM, which is left in that. Chemistry reaction mechanism, sir, we're halfway through. And so maths, we have to finish parabola. Can you stop the recording, sir? You know how to stop it? Yes. Just needs not. कॉपी कर लिया इसको? डन? Yes, sir, done. अब देखो, सपोज ये ऐसा है, लेट्स से x equals to 0 है, then in that case restoring force would be x equals to plus a, x equals to minus a, right? इस केस में क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे एक पार्टिकल, तो इस केस में रिस्टोरिंग फॉर द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वुड बी f equals to minus kx, राइट? Yes, sir. अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा. ये मीन पोजीशन. अगर यहीं पे अगर ये फोर्स ऐसा होता, x equals to, let's say mean position is different. मीन पोजीशन की जो वैल्यू है वो x equals to 2 है, राइट? ये इसका मीन पोजीशन. राइट, ये मीन पोजीशन है, तो इस केस में फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Minus k x minus 2. राइट? तो इस केस में अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है तो ये x हो जाएगा, x equals to x, then displacement of this particle would be x minus 2. So you can write it as f equals to minus k x minus 2. f equals to minus k x minus 2, right? अगर ये फोर्स कुछ ऐसा हो, x equals to plus 3, minus 3, minus 3, then what will be the equation of ये mean position? Minus k x plus 3. Yes. x equals to x, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली वैल्यू हो जाएगी x plus 3. तो इस केस में क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, f equals to minus k x plus 3, राइट? x plus 3. तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फोर्स मतलब मीन पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है. एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन मीन पोजीशन. एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं.
particle is moving along a straight line, a particle is moving along a straight line, a particle is moving along a straight line, a particle is moving along a straight line under the action of force F equals to force F equals to 8 minus 2x Newton. 8 minus 2x Newton, right? A particle is moving along a straight line under the action of force F equals to 8 minus 2x Newton. It is released from x equals to 6 meter. It is released. It is released from x equals to 6 meter, right? नोट कर लो, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस आएगा. It is released from x equals to 6 meter. Done, sir. Find. Yes. First question is first. Is particle moving simple harmonically? Is particle moving? Is particle moving simple harmonically? Simple harmonically. Is particle moving simple harmonically? Second, find the mean position of particle. Find the mean position of particle. Second, third, find the time period of oscillation. Find the time period of oscillation. Fourth, find the time period of oscillation. Fourth, write the equation of displacement of particle. Write the equation of displacement of particle. Mass दिया हुआ है, mass of particle is given as 2 kg. Is particle moving simple harmonically? Find the mean position of particle, find the time period of oscillation, write the equation of displacement of particle. So yes, it's moving in SHM. The mean position is x equals to 4.
right? So time period, I'm still figuring out, so 1 second. So time period is 2 pi seconds. So how do I find the value of phi for the displacement equation? वही तो important है इसमें. Wait. See. F is given as 8 minus 2x, right? So it would be like this: F equals to minus 2 into x minus 4, right? Yes, sir. It means particle is moving simple harmonically. So first में SHM तो हो. First is SHM. Second, at mean position, force acting on the particle would be 0. At mean position, force acting on the particle would be 0. F equals to 0 हो जाएगा. F की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 8 minus 2x equals to 0. Therefore, x equals to 4 meter. Right. Third, find the time period of oscillation. So time period F equals to what? F equals to minus 2 into x minus 4. F is nothing but m into a equals to minus 2 x minus 4. M is 2, so 2 into 1. 2 into a equals to minus 2 into x minus 4. 2 will get cancelled out. Therefore, a equals to minus 1 x minus 4. Right. So hence omega square is 1. Therefore, omega equals to 1. So time period t equals to 2 pi upon omega. It would be 2 pi upon 1. Therefore, 2 pi seconds. 2 pi seconds. Fourth, write the equation of displacement of particle. So this one, x equals to 4 and this is x equals to 6. Particle is released from x equals to 6, right? Matlab at this instant velocity of particle would be 0. Yes, sir. So velocity of particle would be 0 at extreme positions, right? Yes, sir. It means x equals to c would be extreme position. ये इसका extreme position हो जाएगा. यहाँ पे इसकी velocity जो है 0 है. Amplitude of oscillation would be 6 minus 4 equals to 2 meter. Amplitude of oscillation would be 2 meter, right? Then how you can write the equation of displacement of particle at any time t? So x equals to a sine omega t plus a cos omega t. Do you agree with this? Yes, sir. Because particle starts its motion from extreme position. So it would be a cos omega t. So x की value आप क्या लिखोगे? What is the value of x? What would be the value of x? X की value क्या होगी? कहीं पार्टिकल यहीं कहीं यहाँ पे होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये होगा ना. X is distance from mean point, sir. It would be x minus 4, right? Yes, sir. So x would be x minus 4 and amplitude of oscillation is 2.
into cos omega is 1 omega is 1 into t. So x minus 4 equals to x minus 4 equals to 2 cos t, right? Yes, sir. So if the mean position of particle, if the mean position of particle changes, then in that case this equation of displacement would be something like this: x minus 4 or x plus 4, x plus 3, x minus 2, like that. 6 minus 2 equals to 2 cos. Clear है अभी? Note कर लो. Yes, sir. Note कर. Wait, so how did you find the max position as 6? Can you explain that? Particle जो है, it is released from, particle is released from x equals to 6, right? Right, yes, sir. So particle is released from x equals to 6. It means velocity of particle at x equals to 6 would be 0. Which means it's the extreme position. Understood. So extreme position, right? Done, sir. मैक्सिमम पेजेस हो गए. इसका ये ले लो पहले तुम, QR कोड. कॉपी कर लेना इसको एंड देन शेयर करना ग्रुप पे, ठीक है? PDF. Yes, sir. Just wait for a minute. Got it, sir. This is done for today. सॉल्व करते रहो हीट एंड थर्मो, जहाँ पे भी डाउट्स आएगा अपन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में संडे को यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? Okay, sir. चलो बाय, टेक केयर. Bye, sir. बाय.